Hello everyone, I am Archana Gedam. Welcome to Women's International Day organized by Ambedkar International Center, AIC USA. AIC is an organization working towards spreading Baba Saheb's mission and vision worldwide. We take pride in supporting equality, liberty, justice, and fraternity. We had immensely helped in the COVID relief effort, especially in marginalized communities of India. AIC also offers workshops, seminars, mentorships, and advisory sessions, along with several other initiatives. We take every step in spreading awareness and justice to strengthen the society. Today, as we celebrate Women's International Day, I salute every woman of the world for being what you are, believing in yourself, striving to make the society a better place to live, and carrying success with you wherever you go. Indeed, women have contributed greatly to the welfare of the nation. In today's modern world, we have many women being leaders in government, businesses, education, technology, and several other areas. There are several women who have served as president or prime minister of their respective countries. Women hold offices as senators, congresswomen, governors, mayors, cabinet officers, and heads of foundations. There are women judges at all levels of the judicial system and women leaders in several prominent international organizations. We see women handling home and office at the same time, keeping all united. She is strong today than ever before. Ambedkar International Center is celebrating Women's International Day, and with great honor, I must say, Sima Kushwaji has joined us. It's a privilege to welcome Sima ji, also our panel speakers Sujata Ramnee, Dolly Arjun, Asmita Kamre, all the AIC members, and all our participants who have joined us from around the world. AIC takes this opportunity to appreciate all the women out there who are doing great work. Your contribution and leadership is helping every nation to be the foremost. Every woman is an inspiration, motivation to young generations to do something better. This is just one side of the coin, but there is another side as well. We talk about modern women, but at the same time, it's unimaginable that there are few women where they do not even have the privilege to recognize their own identity, their true identity. Even if we say sometime that the world is being modernized, but yet there are some places in today's world where women are not treated with dignity, where she is not free to take her own decisions. Sima ji would be the best person to share her knowledge, her journey and experience with us all, as she must have come across such women in her life. Sima Kushwaji is an advocate at the Supreme Court of India, a strong, independent woman who believes and supports women's rights. I'm sure our participants would be waiting to listen to all the speakers. So without any delay, may I please request you, Sima ji, for the speech? Thank you. Thank you so much. Good morning and good evening, all of you. First of all, thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sima Kushwaji. I'm advocate by professionally. Right now, I am practicing in Supreme Court of India and also handled the Nirbhaya case and Hathras gang rape and murder case. But my personal achievements is not a big achievements, but अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं और जिसमें मैं उत्तर प्रदेश इंडिया में उत्तर प्रदेश राज्य के जिला इटावा के एक बहुत छोटे से गांव से आने वाली लड़की हूँ। मेरा गांव आज भी गूगल पर नहीं है,
बट अगर मेरी अचीवमेंट्स की बात करूं तो मैं गूगल पर हूँ और विकिपीडिया पर भी मैं अवेलेबल हूँ आज। तो ये मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट्स है। मैं मेरे गांव की फर्स्ट गर्ल बनी जिसको 8th क्लास के बाद 9th क्लास में पढ़ने के लिए फाइट करनी पड़ी, जस्ट लाइक अ पंचायत, कि अगर किसी बेटी को गांव से बाहर पढ़ने जाना है तो उसका सिक्योरिटी रीजन, उसके परिवार में अगर अपॉर्चुनिटी देनी है तो पहले मेल पर्सन को देनी है, बॉयज को देनी है, फीमेल को सेकेंडरी रखना है, गर्ल्स को। तो उन सारे बेसिक हमारे जो ह्यूमन राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, एज ए चिल्ड्रन मैं कहूंगी कि मैंने उसके लिए फाइट किया कि मुझे भी मेरे ब्रदर्स की तरह, हमारे विलेजेस के और भी बॉयज की तरह, मुझे क्यों उन बेसिक ह्यूमन राइट्स को नहीं यूज करने दिया जाएगा। तो मैंने अपनी स्टडी करने के लिए फाइट किया। फिर एक छोटी सी पंचायत बैठी, तब मुझे 9th क्लास में पढ़ने की परमिशन मिली। देन आफ्टर मैं नहीं रुकी, उसके बाद जो हमारा नियरेस्ट विलेज के पास स्कूल था वहां से मैंने 8th पास किया। देन आफ्टर मुझे जब 9th में जाना था तो करीब 2.5 किलोमीटर जाना था पढ़ने के लिए। वहां पर भी बिल्कुल परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी घर में फाइट करके अपने ब्रदर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ मैंने 12th अपना कंप्लीट किया। और आफ्टर 12th फैमिली में सभी ने मना कर दिया कि अगर आपको आगे स्टडी कंटिन्यू करनी है तो आप अपने से कीजिए, अपने खुद से कीजिए। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। 12th मैंने पास आउट तो कर लिया, आगे मैं कैसे पढ़ूंगी। और जबकि मैं बचपन से ही, हमारे जो ब्रदर थे वो बाबा साहब अंबेडकर जी को पढ़ते थे। बाबा साहब ने करीब 22 डिग्रियां हासिल की थी। मैं उनकी तरह स्टडी करना चाहती थी। मैं इंदिरा गांधी जी को पढ़ती थी, मैं झांसी की रानी को पढ़ती थी, माता सावित्री बाई फुले को पढ़ा था। तो इन सब के अचीवमेंट्स में एक चीज कॉमन थी कि इन सब ने एजुकेशन बहुत अच्छे से, अपनी एकेडमिक जो भी है एजुकेशन वो बहुत अच्छे से की थी। और मुझे इन बेसिक एजुकेशन राइट से मुझे दूर रखने के लिए पूरी तरीके से फैमिली एंड सोसाइटी मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रही थी। तो ये मेरी बेसिक फाइट थी, बट मैं नहीं मानी। तो हमारे पास गोल्ड की बाली थी एंड पायल थी सिल्वर की, मैंने उसको बेच दिया और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लिया तब मेरे लिए डिफिकल्ट ये था कि मुझे साइकिल से जाना था कुछ दूर तक, उसके बाद मुझे बस से जाना था करीब 35 किलोमीटर तक। मेरे घर में मुझे साइकिल भी अवेलेबल नहीं करवाई जाती थी, मैं 2.5 किलोमीटर पैदल जाती, उसके बाद मैं बस से जाती। बट एक जुनून था कि मुझे अपनी स्टडी पूरी करनी है। देन आफ्टर मैंने डिसीजन लिया कि ये जब डिस्क्रिमिनेशन फीमेल के साथ हो रहा है तो इसके लिए मुझे अपनी आवाज उठानी है। तो मैं वोकल हो गई और मैं थोड़ी सी एग्रेसिव भी हो गई अपने राइट्स को लेकर के और साथ ही अन गर्ल्स के राइट को लेकर के। देन आफ्टर हमारे बहुत सारे फ्रेंड आफ्टर ग्रेजुएट उन्होंने चूज किया कि वो पीसीएस बनेंगे, पीएचडी करेंगे, टीचर बनेंगे। बट मैंने चूज की वकालत, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड था जहां से मैं अपने राइट्स के साथ साथ मैं दूसरों के राइट्स के लिए भी फाइट कर सकती थी। तो मैं अपने गांव की पहली लड़की बनी कि मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मैं अपने एरिया की पहली लड़की बनी कि मैंने लॉ कंप्लीट किया। देन आफ्टर मुझे जज बनना था, उसके लिए भी प्रिपरेशन करती रही। यूपीएससी के लिए भी मैंने कई एक एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और मैं इंटरव्यू तक पहुंची। लेकिन 2012 में जब निर्भया केस दिल्ली में हुआ, मैं मेरे पीजी में थी, मैंने देखा बहुत सारे नंबर ऑफ गर्ल्स को हमारे उस पीजी से उनके पेरेंट्स वापस बुला रहे। उनका कहना है कि आप दिल्ली में सेफ नहीं हो, अगर आप सेफ हो, सिक्योर हो, देन आफ्टर ही आप कुछ कर सकते हो। मुझे ये चीज बहुत खराब लग रही थी। मुझे लग रहा था कि सिर्फ एक डिफरेंट जेंडर होने के वजह से क्या हमारे बेसिक राइट्स से हमें अलग रखा जाएगा। और दूसरा कि अगर हमें, मेरी फीमेल की अगर सिक्योरिटी का इश्यू है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सोसाइटी, गवर्नमेंट्स, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसका आंसर कौन करेगा? मैंने 2006 में ही अपना लॉ कंप्लीट कर लिया था। मैं एज ए रजिस्टर्ड लॉयर 2006 में ही रजिस्टर्ड हो गई थी।
जब मैं दिल्ली में थी और ये निर्भया केस हुआ, उस दिन 17 दिसंबर को जब ये न्यूज़पेपर में सारी खबर मैंने पढ़ी थी और गर्ल्स हमारे पीजी से जा रहे थे, मैं अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी कि एक साइड तो मैं देखना चाहती हूँ कि फीमेल 49% जो पॉपुलेशन है देश की वो आगे बढ़े, हर चीज में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वो इक्वली टैलेंटेड है, उसके इक्वली एनर्जेटिक है, बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन उसको अपने घर वापस जाना है। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया सेम डे कि इन 4% को मैं हैंग कराऊंगी, जिसने सिर्फ निर्भया के साथ ये क्राइम नहीं किया, ये 49% देश की पॉपुलेशन को इन्होंने एक दहशत में डाल दिया है। हमारे देश की राजधानी में ये क्राइम हो रहा है, 1-1.5 घंटे तक कंटिन्यू निर्भया के साथ ब्रूटल तरीके से रेप किया गया, उनका मर्डर किया गया। तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था, निर्भया केस मेरी लाइफ का पहला केस था। मुझे कानून के बारे में मैं स्टडी बहुत कर रही थी, बट मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं थी तब तक। बट मैंने कोर्ट में चलते वक्त लोगों से पूछा, जो सीनियर एडवोकेट है उनके साथ, किसी भी वकील से मैं बात कर लेती थी, और इस केस पर मैंने पूरा रिसर्च किया। देन आफ्टर मैंने एक और चीज नोटिस किया, आफ्टर निर्भया केस इंडिया में बहुत बड़ा फीमेल को लेकर के एक डिबेट छिड़ी कि उनके बेसिक राइट्स हैं, फीमेल को कैसे सेफ एंड सिक्योर किया जाए। बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, आईपीसी, सीआरपीसी, जुवेनाइल एक्ट में सभी में हर जगह अमेंडमेंट कर दिया गया। बट मैंने एक चीज नोटिस की ड्यूरिंग प्रैक्टिस, कि हमारे पास सफिशिएंट कानून है, हमारे पास सफिशिएंट लॉज है, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे कि हमारे संविधान में इक्वल तरीके से सभी के, चाहे वो माइनॉरिटी हो, शेड्यूल कास्ट हो, विमेन हो, या ऑल टाइप थर्ड जेंडर हो, सबके लिए इक्वल बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात की गई, फंडामेंटल राइट की, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये चीज मैंने कॉमन निर्भया केस में भी फेस किया। मैं निर्भया केस में प्रैक्टिस के साथ साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ साथ, मैं सिस्टम से भी फाइट कर रही थी, क्योंकि ये केस भारत ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा में आया था, जिस तरीके से बिटिया के साथ क्राइम हुआ। लेकिन मेरी ये जिद थी कि हमारी निर्भया की कोई गलती नहीं थी, उसको गवर्नमेंट सेफ सिक्योर नहीं कर पाई, उसका सोसाइटी का अगर स्ट्रक्चर ऐसा है कि फीमेल के साथ क्राइम को इजिली जस्टिफाई अगर इंडिया में किया जा रहा है, तो फिर इन लोगों को मैं हैंग करवाऊंगी। और वो हैंगिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो आईपीसी में प्रोविजन है, उसके तहत ही मैंने करवाया। तो ये मेरे लिए इजी नहीं था। लेकिन जिस दिन हैंगिंग हुई इन चारों की, जो टोटल नंबर ऑफ 6 एक्यूज्ड थे, जिसमें एक जुवेनाइल था, जिसमें एक ने सुसाइड कर लिया, जिसमें 4 लोगों को जिस दिन फांसी हुई, उस दिन एक बहुत बड़ा डिस्कशन और डिबेट छिड़ा कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि एक बार में 4 लोगों को हैंग किया जा रहा है। मैं डेथ पेनल्टी के बहुत सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज के भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि हमारे इंडिया में आज भी फीमेल को बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करना पड़ रहा है। तो पहले हमारी फीमेल को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे, ये सोसाइटी प्रोटेक्ट करे, अगर सोसाइटी में कहीं खामियां हैं, कमियां हैं, तो वो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो। तो ये फिर जब 2020 में हुआ, तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, और ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम महसूस किया कि लोग जो है, स्पेशली फीमेल, उनके अंदर इतना पेन है कि वो चाह रही हैं कि किसी की अगर हैंगिंग हो रही है जिसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, 4 पीपल को, इट मीन्स इस सोसाइटी के अंदर कुछ हिडन है, और वो टाइम टू टाइम रिफ्लेक्ट होता है। जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मी टू कैंपेन था, जिसको वर्ल्ड लेवल पे चलाया। मैं कहीं पर भी जब कैंपेन करती हूँ तो मैं देखती हूँ फीमेल को, जब मैं कहती हूँ कि आप अगर 500 फीमेल हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगी कि आप लोग अपना हैंड को रेज कीजिए कि आपके साथ कभी किसी ने फिजिकल या वर्बली अब्यूज नहीं किया। तो बिलीव आप लोग करेंगे कि कोई एक सिंगल फीमेल नहीं होती है जो ये कहे कि मुझे मेरी लाइफ में अभी तक किसी ने किसी तरीके का फिजिकल या वर्बली अब्यूज नहीं किया। इट मीन्स इस सोसाइटी में कुछ ऐसा हिडन है
जो हमारी फीमेल सफर कर रही है, जिसके डर के वजह से वो अपने घर बैठ जाती है, वो उसके स्कूल कॉलेज ड्रॉप कर देती है, या वो वर्किंग प्लेस पर वर्क नहीं प्रॉपरली कर पाती है। तो निर्भया केस डिसाइड होने के बाद फिर से ये डिस्कशन हुआ, और उसके साथ ही साथ अगर मैं अपने और भी पर्सनल अचीवमेंट्स की बात करूं, इवन की मैं एक और बात इसमें करना चाहूंगी, मैं एक विलेज से आने वाली सिंपल एक गर्ल हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाले लॉयर्स हमारे सामने थे, मैं उतनी वोकल नहीं थी, उनके सामने हेजिटेशन भी होता था, बट मेरा विजन क्लियर था, मेरी स्टडी ऐसी थी, फैक्चुअली मैंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया हमेशा। देन आफ्टर ये मैं कर पाई। तो एक और चीज मैंने इंडिया में देखी है जो कॉमन है, कि यहाँ पर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल क्लास पे जो भी बच्चे हैं हमारे, जो हमारे यूथ स्टडी करके आ रहे हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतना उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो या स्कूल कॉलेज में, जो कहीं पर भी अभी भी रियलाइज उनको करवाया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं मैं फेस कर रही थी, बट फाइनली ये एक मेरा अचीवमेंट हुआ। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं कि सोशल इनिशिएटिव की, कि मैंने क्या सोशल इनिशिएटिव लिए, तो मैंने एक समृद्ध भारत ट्रस्ट बनाया है। उस समृद्ध भारत ट्रस्ट में मैं लीगल हेल्प लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ, स्पेशली जो भी वीकर सेक्शन है, फीमेल है, पुअर सेक्शन के लोग हैं, और इसमें रेप विक्टिम्स हैं, सर्वाइवर्स हैं, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल हेल्प देती हूँ। अवेयरनेस हमारी कार्यक्रम चलते हैं। एजुकेशन में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स कोई पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उस पर हमारा ट्रस्ट वर्क कर रहा है, और इस तरीके से हम लोग प्रॉपरली वर्क करते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं स्टेप्स की बात करूं कि क्या क्या स्टेप्स उठाने की जरूरत है, तो एक चीज मुझे जो है वो कॉमन समझ में आई है, कि इस पूरे वर्ड की, जो पूरा वर्ड का स्ट्रक्चर है, ये मेल मेकिंग स्ट्रक्चर है। चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात करें, या हम फिनेंशियली या बॉर्डर्स की बात करें, एवरीथिंग, सारा कुछ पैट्रियार्किकल माइंडसेट से बनाया हुआ है। जितनी भी हमारा या इवन की हम बात करें, सोशली बात करें या पॉलिटिकली, हर तरीके से। लेकिन आज जब एक फीमेल अवेयर हो रही है, इक्वली एजुकेशन उसके पास है, वो टैलेंटेड है, एनर्जेटिक है, तो फीमेल के परसेप्शन से सोसाइटी में जो कमियां हैं, जो खामियां, उनको चेंज करना चाहिए, जिसके लिए वो आज वोकल है। अभी अर्चना मैम को मैंने सुना, और भी हमारे कलीग्स यहाँ पर अभी स्पीकर्स हैं, उनको भी मैं सुनूंगी, बट इनकी एक्सेप्टेंस इजली इस सोसाइटी में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इतना टाइम के बाद भी हम इंडिपेंडेंट हो गए। अगर भारत की बात की या वर्ल्ड की भी, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, कि फिर भी हम बहुत बड़ा चेंज नहीं ला पाए। और ये चेंज सिर्फ फीमेल के डेवलपमेंट की बात नहीं है, ये सिर्फ फीमेल के राइट्स की बात नहीं है, ये बात है होल वर्ल्ड में स्ट्रक्चर कैसा हो, डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या हो। अगर हम डेवलपमेंट की डेफिनेशन की बात करें, तो आप लोग, हमारे जो भी कलीग्स हैं आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग यूएस में हैं, लंदन अमेरिका में, अभी हम रिसेंटली यूक्रेन और रसिया का डिस्प्यूट देख रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, जब से ये क्रिएट हुआ है इनका डिस्प्यूट, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, आप लोग देखेंगे कि जितने भी वर्ल्ड वॉर हुए, सभी में लीडरशिप जो है वो मेल पर्सन के हाथ में रही है। उनको पावर चाहिए, उनको अपनी आइडेंटिटी खुद की चाहिए, डिस्ट्रॉय में ज्यादा बिलीव है बजाय कंस्ट्रक्शन के। फीमेल कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रही है, फीमेल ने परमाणु बम नहीं बनाए, आर्म्स की डेफिनेशन नहीं दी है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो फीमेल ने हमेशा, आज भी वो इंडिया में अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुई, फीमेल जो भी है पॉलिटिकल रूप से, जो भी है हमारी पार्टी की जो लीडर है, मैं बीएसपी की प्रेजेंट में स्पोक पर्सन हूँ, बहन सुश्री कुमारी मायावती जी हो गई, प्रियंका गांधी जी हो गई, या और भी जो फीमेल लीडर हैं, उन्होंने कभी भी, उनके टाइम में कोई भी रॉइट्स नहीं हुए, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे रिलीजियस के आधार पे हो, या कास्ट के आधार, इवन की ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें,
स्वीडन या स्विट्जरलैंड की प्राइम मिनिस्टर, जो कि कोविड के टाइम में मैंने देखा कि जब वर्ल्ड कोरोना के टाइम पर सारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, वो हमारी प्रेसिडेंट ने उस टाइम में उसको निगेटिव कर दिया, डिक्रीज हो रहे थे वहां पर। तो इनके मैनेजमेंट में, इनकी लीडरशिप में खामियां नहीं है, बट जो स्ट्रक्चर सोसाइटी का है उसमें फीमेल जब नए तरीके से अपनी बात करना चाह रही है, क्वेटा थर्नबर्ग की बात करें, यूसुफ मलाला की बात करें, या वर्ल्ड में बहुत सारी फीमेल की बात कर रहे हैं जो कि हमेशा कंस्ट्रक्शन की बात कर रही हैं, जो कि हमेशा कंपेशन के आधार पर चीजों को डिफाइन करने की बात कर रही हैं, बट इन सब की उस लेवल पे एक्सेप्टेंस ना होने के कारण इस सोसाइटी में अभी भी बहुत सारा कुछ बदलाव की रिक्वायरमेंट है, जो कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फीमेल का बढ़ता है, अगर रिलीजियस के आधार पर भी बढ़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन के या टेक्नोलॉजी के हर जगह पर अगर फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज होगा। बॉर्डर्स की डेफिनेशन एक परिवार की तरह होगी, ना कि बॉर्डर्स पर आर्म्स फोर्स को हमें खड़ा करना पड़ेगा कि एक दूसरे को अगर हम डैमेज कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का सोल्जर हो या इंडिया का हो या यूक्रेन या रसिया का, कहीं का भी हो, उनकी फैमिली है, उनके भी बेसिक ह्यूमन राइट्स है, बट हम अपने सेल्फ पावर, हम अपनी सत्ता के लिए, हम अपने ईगो के लिए किसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इट मीन्स अब ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को अगर एक फीमेल डिफाइन करेगी तो डेफिनेटली बदलाव होगा। तो इस लेवल पे मेरा ये मानना है कि फीमेल का जो परसेप्शन है, फीमेल का जो व्यूज है इन सारी चीजों पर, उसको मेल पर्सन को इस पैट्रियार्किकल माइंडसेट को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो बदलाव जरूर होगा। अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें कि जो भी क्राइम यहाँ पर हो रहे फीमेल के अगेंस्ट, उसमें अपब्रिंगिंग फैमिली में मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड की बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन तरीके से की जाती है, डिस्क्रिमिनेटरी है। फीमेल को हम बता रहे हैं कि घर में रहना है, कम बोलना है, बाहर नहीं निकलना है, आपको अगर जॉब भी करनी है तो पर्टिकुलर आपके लिए एरिया जी। बट वहीं हम मेल को स्पोर्ट्स खेलने दे रहे हैं, उसको हम एक्सपोजर दे रहे हैं। और जब एक फीमेल घर से बाहर निकल रही है और एक मेल जो बाहर है, इन दोनों में फिर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि फीमेल का तो ड्यूटी है कि वो घर में रहेगी और मेल बाहर का वर्क करेगा। जब फीमेल बाहर निकल रही है तो वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिमोलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए इंडिया की बात करें कि इंडिया हमारी एक से एक टैलेंटेड जो गर्ल है, इंटेलिजेंट जो विमेन है, उनके टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहा है। टाइम टू टाइम हम इस चीज का एनालिसिस तो करते हैं कि हमारी जीडीपी डाउन हो गई, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि इस देश की एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन 49% जो फीमेल की है, उसको हम इक्वली अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, उसके टैलेंट का यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम हर फील्ड में डाउन। तो इन सारी चीजों पे मुझे लगता है कि फीमेल की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्राइम भी रुकेगा, उनको एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि हमने अगर अपने परिवार के अंदर जिस फीमेल को कभी अपनी बात रखने का राइट नहीं दिया, उसको फिजिकली मेंटली अब्यूज किया, हमने उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया, सोशली इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया, तो वो कैसे लीडरशिप लेगी, वो कैसे वर्क करेगी। और अगर मैंने अपनी फीमेल को, चाहे वो हमारी पत्नी हो, बेटी हो, मदर हो, कलीग्स हो, लवर हो, कोई भी हो, अगर हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सारी चीजों की उनको दी, तो एक फैमिली के साथ साथ वो सोसाइटी और वो कंट्री सभी डेवलप करते हैं। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मेरे परिवार में मुझे पढ़ाई से रोका गया था। अगर मैं नहीं पढ़ती तो शायद आज न्यूज़पेपर में मेरे गांव के नाम को लोग नहीं जान रहे होते, मुझे नहीं जान रहे होते। आज मेरे पेरेंट्स जो हैं, ब्रदर हैं, मेरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं प्राउड फील करता हूँ जब मीडिया वाले उनके सामने जाते हैं। लेकिन अगर मैंने वहां पर रोक दिया होता अपने आप को, तो सिर्फ सीमा नहीं, सिर्फ
कहेंगे कि अर्चना मैम नहीं, सिर्फ बहन सुश्री कुमारी मायावती जी नहीं, हर घर में इस तरीके की एक बेटी है जिसको हम डिमोलाइज करने की तरह, जिसको हम सिर्फ लिमिटेशंस उसकी बताने की जगह उसको खुले आसमान में उड़ने देंगे, तो शायद एक सोसाइटी बहुत अच्छी होगी और बहुत कुछ बदलाव होगा। पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व खुशहाल होगा। डेवलपमेंट की डेफिनेशन में सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, परिवार के अंदर वो कंपैशन वाला वो पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा होगा कि लोग डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, लोग एक दूसरे का मर्डर नहीं करेंगे, जो कि फ्रस्ट्रेट होकर के मैंने देखा, यूएस की भी बात करूं कि वहां पर भी लोग ऐसा करते हैं। इंडिया में भी अलग लेवल का एक फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। हम एक और चीज है कि फीमेल को हम एम्पावर्ड कर रहे हैं, उसको हम एजुकेशन दे रहे हैं, उसको अवेयर कर रहे हैं, बट वही मेल पर्सन की काउंसलिंग नहीं हो रही है। तो मेल जब उसकी काउंसलिंग नहीं हो रही तो इन दोनों के एक की जो ड्यूटी है कि वो फीमेल को इजीली एक्सेप्ट करे, और फीमेल जो कि अपने राइट्स का यूज करना चाहती है, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। और वो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए कोई भी इंडिया में ऐसा अभी तक कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर काउंसलिंग से हमने मेल को दूर रखा, क्योंकि एक पर्टिकुलर माइंड सेट में उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, और वो माइंड सेट अगर चेंज नहीं हुआ तो फीमेल के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि वो अब नहीं रुकने वाली है। लेकिन एक चीज है कि जो भी फीमेल अब आगे बढ़ रही है अपने राइट्स को लेकर के, तो उसके लिए एक कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, वो है रिलेशन की क्राइसिस। अगर एक फीमेल अपने ब्रदर के बराबर प्रॉपर्टी, अपने फादर की प्रॉपर्टी में अगर वो हिस्सा मांग रही है, तो उसके ब्रदर उससे रिलेशन खत्म कर दे रहे हैं, उसके फादर उसको बोल रहे हैं नहीं तुम्हारा ये राइट नहीं है, और जब वो कोर्ट जाकर के अपने राइट का यूज कर रही है तो वहां पर उसको रिलेशन से उसकी क्राइसिस हो रही है, वो उससे रिलेशन खत्म कर दे रहे हैं। तो फीमेल पर एक मेंटली एंड इमोशनली बहुत प्रेशर है। इस टाइम पर भी वो अपने आप को कैसे स्ट्रगल करके एक वर्ड को नया सेफ देना चाह रही है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि ये एक जो है एरा ऐसा है फीमेल के लिए, ट्रांजिशन पीरियड है, यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है। बहुत सारे रिलेशन से हमें क्राइसिस होगी, बट हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने डेवलपमेंट के बारे में नहीं, अब ये पूरा वर्ल्ड को हम सेफ देना चाहते हैं अपने तरीके से, अपने परसेप्शन से, जिससे कि ह्यूमैनिटी को सेव किया जाए, जिससे कि लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सके। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच। Thank you. Very well said. थैंक यू सो मच सीमा जी, आपने अपने विचार और आपका अनुभव हम सबके साथ शेयर किया, उस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Now, may I please request Dolly Arjun, who is a physician associate working in medicine from Cambridge. You may please go ahead, Dolly. Thank you so much. Jai everyone, and thank you Archana, thank you Seema ji. भले ही आपका गांव का नाम गूगल मैप्स में ना हो, आपका नक्शा पूरा दुनिया में मतलब छाया हुआ है. So thank you so much for everything you said. It's very hard to follow everything that she said, but I'm going to speak a little bit about my work that I've been doing in medicine and a couple of other areas. So originally I'm from Hyderabad. I was born there, and my parents escaped to the US when I was very little. So I grew up in California, and now I live in the Boston area. And I guess a couple of different kinds of initiatives that I'm working on, or some things that are coming up, is for the past 2 years, I've been working in the COVID ward in Boston. And for the past 5 years, I've been running with, group of friends and my partner, something called Rural Health India. So we have a lot of friends and people in healthcare, nurses, lab technicians, and other friends who work in the hospital in Chhattisgarh, Odisha. So what we do is we see patients on telehealth. So on WhatsApp, we do a phone call,
and they tell us, whatever is the problem. Many times we also, we review their labs or see what is the problem. And mostly the service is explicitly for people from the community. So Dalit, Adivasi, Bahujans, we treat them for free. And we pay for their treatment. We also refer them to any surgical centers that they need, and we follow up with their cases. And recently that work there was an interview of our work on CNN and the New York Times. So since that happened, we actually got a lot of volunteers. So now we have a medical staff of about 10 doctors in different fields, but mostly internal medicine, who also see our patients. And we also have a volunteer staff who do administrative work of maybe 5 or 6 people. So that's one of the initiatives that I'm working on. And, related to that also, Sima ji mentioned a little bit about it, but, there's not good mental healthcare. This is both in the United States as well, and definitely in India, it's very hard to get mental health care. But before doing medicine, I was actually a social worker, and I worked with victims of domestic violence as well as child sexual abuse. I would say kind of like my specialty besides just like medicine is working with victims of trauma and helping them find a route to, a path to healing, because right now in our modern medical system, we rely overly on psychiatric medications to help deal with, mental health problems. So anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, a lot of these things actually come from trauma that one has experienced, trauma both interpersonally, maybe within the family, but trauma also within society. So, if you think about, the trauma of being an oppressed caste person or a Dalit person, there's a historic kind of trauma happening there that gets passed down from generation to generation that we all carry within our bodies. And that's been shown even in like genetics, that trauma is carried down genetically. So I'll come back to that point later. And last thing related to health work is I'm working with my school, the school where I went to school, to open a healthcare center. So what they want to do is partner to train people from our community to become physician associates and have faculty that goes from here to there to have a center there. So this is a long project, but hopefully it will happen in like maybe 5 years, something like that, because we really, really need a lot more people from our community who are, who are doctors and who are psychiatrists, who are therapists, because what I have seen from my experience working in Chhattisgarh, Orissa, Hyderabad, is that sometimes when our patients go to these doctors, the doctors tend to be from, oppressor caste communities, and many times they don't physically touch, our patients, which is, you can't treat a patient without putting your hands on them. So that's the health stuff. And then, otherwise, what part of what I do here, which I do some real estate work. So my goal is basically to try and in my family, of course, and in probably many of us who are on this call, we have never owned a home or had land. And so I'm the first in my family to soon to own a home. And my goal is to get other people from our community here to also help them through that process. So I've been doing this for a couple of years. And my goal related to that soon is also to open like a community center, like an Ambedkar center here in the Boston area. So that's also something hopefully that will happen in the next couple of years, maybe next year. And then one of the last two things is that I'm somewhat like a part-time artist. I like to take photographs, and I've done a lot of theater work. So with the child sexual abuse survivors, I have worked to produce and co-produce multiple plays that have been like showcased in New York as well as in Cambridge. And so using arts for healing, and also me and one of our Bahujan sisters, Anusha, we recently applied for a grant from the city of Somerville, which is where we live. And we got an arts grant to just do a display of artists
from the community. So this happened right before the pandemic. And in 2020, I went to India and I was collecting a lot of art pieces from people from the community. So I was only accepting art from like SC, ST, OBC artists. And I was able to collect a lot of pieces. And so actually that art show is happening on April 30th this year at a community center here. And I'll send everybody the flyer soon, but basically we have these like amazing artists in the community, you know, people who are daily wage laborers. Some of our community members are also fine art, studying in fine arts, and there's never been an exhibit to show, you know, we're so focused sometimes on kind of like medicine or tech or, you know, but we have really amazing artists in the community. And I'm so excited to, you know, produce the show. There's these really beautiful pieces. A lot of them we have original pieces, and many of you might be familiar, for example, with like Malavika Raj's her photo of Savitri Mai with the plants coming out of her ears. And so we have many artists like that. All of their work will be showcased here. And those are probably the main things. Other things, of course, you know, there's AIC and many of the diaspora Ambedkarite groups here, like BSG, AIM. Everyone's working on mentoring students, so that's something that's always ongoing. And then the last thing I'll mention here, because we are doing kind of like a Women's Day special today, is that recently I helped to organize a workshop for men from the community, because a lot of the airspace or the time, you know, even in the chat groups, or sometimes leadership is frequently taken up by men in the communities in the here, and so, you know, I think there's possibly a dual issue, and Sima spoke a lot about this, is just, you know, how difficult it is when you have so many barriers, like the barriers of not being encouraged into leadership. Is one reason women maybe shy away from taking leadership roles. But then the second thing is that on the flip side, you also have men who have always been encouraged to take up really a lot of space, you know, the words that they speak, you know, everything. So, so I think between those two combinations, oftentimes we don't have enough or equal leadership among women. And so this workshop the goal of the workshop was to try to work with men to see, you know, what is it that needs attention in men. And I think actually Sima spoke to this as well, which was to say the way that we enculturate, you know, women and men is so different. So of course you have these two very different tensions happening. And I think how that displays itself is, you know, men oftentimes in leadership positions, you know, maybe they're not supportive of women's leadership positions, or maybe they're not listening. And so some of that work is just healing. So I think she was talking about that a lot, is how do you heal from those things? Because really, when you're looking at governments, it's men who are in charge causing all these wars, because maybe that's how they know how to process things. So I think even on a smaller scale, if we look, that's kind of happening in interpersonal and professional relationships or in movement spaces. And I think our movement is it has a potential to be so powerful, but it's hard to be that powerful when there's so much struggle right now, you know, even within. So I think that was an interesting project, was to try to help organize this. There was a lot of pushback. There was like a lot of denial. It was very difficult. But we had a couple of men from the groups who were also helping. So I would say that felt like a very important thing to try and do. And I'm hoping like that will hopefully happen. I think there's a couple of Ambedkarites from UK who are also interested in holding those workshops there. And then I think just in terms of Archana, the guideline that she gave me, it also says kind of, you know, what can we do both in terms of like, you know, women's empowerment, but also how to think about changing society. And I would say for me, two important pieces in feeling empowered enough to do this work was, number one, knowing our history. So as oppressed caste people, as Dalit, Adivasi, or OBC people, we oftentimes actually, you know, don't know our history.
And that's very challenging because you're just trying to get through day by day. But actually, honestly, oppressor caste people, Brahmin, Savarna people also don't know their histories. So I think it's very important, whether you're an ally or whether you're an oppressed caste person, to really learn about your history, because when we stand in our history like oppressed caste people, when we think about the generations before us that made it possible for us to even exist and to have these opportunities, like, we have so much power behind us. So knowing that is really empowering. And I think for oppressor caste people, knowing that their legacy, the legacy that they come from, is one of this very colonial violence, rape. This is kind of unfortunately, part of their tradition, right? That's how you take over a people and how you colonize a people. It's a very violent history. So I think really, as a person in this lifetime, to do something, you have to heal from that violence as well, because it's not normal to be like that, right? So I think whether you're an ally or whether you're someone from the community, it's very important for us to know our histories and also to work on healing ourselves from some of that violence. And the last thing I want to say, just about women's empowerment, I don't feel like I'm particularly qualified to comment on that, but what I want to say is as women, because of kind of the way that we're raised or the society that we live in, we always doubt ourselves, right? We always think that that whatever we're thinking isn't smart, or maybe we're not smart, or maybe we don't have valuable things to add to society or to people. And I guess the only thing I can say about that is, and I have to remind myself of this all the time, is you women, and especially sometimes maybe we don't get support in our families, or we're not getting a lot of positive feedback. But the truth of it is that you are extremely loved, you are extremely respected, and you are extremely needed. So every time you think to yourself that maybe what I'm thinking doesn't make sense, or maybe I shouldn't say this, if you're thinking that to yourself, just imagine so many other women are thinking the same exact thing. So really what it is whatever you're thinking, whatever it is you're wanting to do or wanting to say, or wherever you're wanting to take up space, in an organization, at your work, at your house, you should just do it, because you are so loved and you are so respected. And really, when women have the courage to kind of to do that, we really are able to change our society, our communities, and really kind of like what Sima Ji was alluding to. I mean, essentially, when women step into leadership roles, we have the potential to heal and to change things. So I think I'm going to end it at that. I think I've used up my 10 minutes. The last thing I just want to say is please keep up to date about our the art show. I'm going to send a poster soon in all of the groups, and the show is going to be live streamed as well. So you can watch it virtually, but it's also in person. And if anybody wants to come and visit to Boston and stay here, we'll try to find a place for you to stay. So please come. Thank you so much, and Jai Bhim, everyone. Thank you so much, Dolly, and good luck with the artwork as well. That would be a good one, I think. Now, may I please request Sujata Ramnee, a business owner and a community organizer from Seattle. May I please request you for the talk, Sujata? Please go ahead. Thank you. Thank you. Good day, good evening, and most of all, a very warm Jai Bhim to everyone, and my heartfelt gratitude to Ambedkar International Center for having me on this panel. After listening to Sima and Dolly's work, especially all the areas that both of them spoke about that are, completely holistic and interconnected, I think it is going to be a tough act for anybody to follow, let alone someone who comes on the basis of Brahmin merit. I apologize for reading from a written statement. Zoom is still not a comfortable medium for me to speak extempore. I love, interacting face-to-face with people like most of us do. But here goes. My name is Sujata, as Archana introduced me. I come from a Brahmin family, and my first exposure outside this Brahminical cocoon happened when I came to the US for my master's degree. While my eyes were open to anti-caste issues decades later, it was the first time that I had Muslims as neighbors and close friends.
And for the first time, I saw Pakistanis as friends and not folks we needed to defeat in a cricket match for some show of nationalism. I was asked by Archana to talk about my achievements, but I must say that, my achievements are mostly, some hard work, some aptitude for the sciences, thrown in with immense privilege and social capital that comes automatically by being in the Brahmin community. I went to the Agraharam, also known as IIT Madras, did my master's at UMass Amherst. Dolly, I think, the UMass loyalty is still very much there. And I worked at Microsoft for many years. I guess being a non-white woman in tech, I was in the operating systems division in the late 90s and 2000. At that part, I can definitely claim some earned achievement. And I'm assuming that there are enough folks in the audience today from the tech industry, and hence I'm sharing this. My contribution to the industry at the time was in building one of the first internet scale, client server security features. My family moved to India in 2009, and I switched tracks from tech to sustainability and organic farming. I was volunteering for a few years for community supported agriculture, and that eventually led to me co-founding an organic foods brand about 5 years ago. My foray into any sort of social initiative came from this area of interest. And I must confess, when I first started volunteering, the social initiative was still cast in this very bourgeois, Savarna viewpoint that was limited to, healthy food and healthy soil. But very soon, the lived reality of farmers and farm labor was something that I had to learn very quickly. And so social realities became very integral to my work. I had known about caste growing up. In India, it is impossible to not see it. But it was only about the time of Rohit Vemula's institutional murder and subsequently that of S. Anita and my own family and community's really aggressive victim blaming reaction that started my questioning, Brahmins and their complicity in this entire system. And it was only after I started reading Baba Saheb that I started getting more scientific and accurate answers as to, why the system or communities, especially I'm talking about oppressor communities, behave the way they do. I was asked to talk about the social initiatives that I have been working on. In India, my social initiatives are largely tied to my work. We work with small and marginal farmers, mostly farmers with roughly about 2 to 3 acres of land on an average, and all of them pretty much less than 5 acres of land. The whole family, it is not a single person's land ownership. And most of our farmers, we work with them through women-run farmer cooperatives. And several of the cooperatives also have Adivasi farmers. We are committed to fair trade as we believe that economic justice is the foundation to social and environmental justice. Within our company, most of our employees are Bahujan Pasmanda women who come from the local bastis. While we still haven't been able to pay them fair wages in the really true and authentic sense of the word, we have done much better than the free market in India that still largely operates on Manu's laws. These are things I don't consider as social initiatives, but just more on how we put to practice our vision of an ethical business. So all I'm trying to do is run an ethical business to the extent that I practically can. We are also one of the few for-profit food businesses in India that stood in solidarity with the farmer struggle. Last year at work during Ambedkar Jayanti, we brought someone from the education field to talk about women's education.
And this person has done a lot of work in the area of adult education and supporting communities on how important it is for them to educate, especially their daughters. So she asked the women a very simple question, and she said, do you want your daughter to face what you have endured in life? Do you want your daughter's life to look like yours? And this single question spurred the most powerful discussion that day. And the really, really overwhelming conclusion that came out of that discussion was that the path for their daughters out of this was education. And subsequently, one of our women employees, Rashida B, brought her daughter over, Farheen, saying that Farheen needed help in securing admission for her intermediate application. And we put her in touch with an NGO that worked with minority educational institutions. And she got admission with full scholarship into the Telangana minority residential schools designed on the lines of the Swero school. She loves the institution. She's in the hostel and she's studying very well. She's really thriving. And her goal when she grows up is to be an IPS officer. In the US, I volunteer on human rights mobilizing that covers, and this is mostly just, citizen level volunteering, anti-war, anti-caste, racial justice, and workers' rights. Last summer, I assisted AIC members to raise money for COVID relief in India. What steps or measures can be taken to change the face of society? I know, the speakers in front of me spoke a lot about within the community stuff, which was very, very powerful. And since most of my volunteering has largely been on policy level issues, my ideas are at the policy level. With the recent electoral results, I'm not sure what immediate momentum can be built for a caste census in India. If the BJP is building a narrative of an OBC-friendly party, perhaps there is a possibility to push for a caste census. But in the meantime, especially in the non-Savarna run states, as in non-BJP, Congress, or Aam Aadmi Party states, and particularly, I come from the South, and particularly in a state like Tamil Nadu, as an example, where Brahmins don't have political power, a focus on universal and good quality English education up to college is a policy level, social movement that I think is worth mobilizing for, as it will help break down barriers systematically. And while I know this is Women's Day and the focus is on women, and women have the most, to be able to, the most number of barriers to cross, and education is that much more critical. But a universal system is something that I feel should be focused on if it is a wide policy level social movement. My message, for youngsters, being a Savarna, my appeal to the youngsters in the Savarna community, I don't know how many of them are tuned in today, but my appeal is to really earnestly engage in reading Baba Saheb. I know that this is hugely threatening to our Brahmin class interest, and conversation with family elders will never be the same again. I believe that it will connect us back to our innate humanity, and all of Indian society will improve as a result of it. And my message to the youngsters in the Bahujan community is that I'm immensely, immensely grateful for all the work that you do in engaging in building awareness of Baba Saheb's work. And when Brahminism is smashed and we actually realize the notion of India as a nation, it will be entirely because of your creativity, persistence, and hard work. And in the meanwhile, I'm happy to help
in any way, especially if you need anything by way of job seeking networks in tech, or any tips and support as an entrepreneur, because those are places where I have networks and I'm involved. So please feel free to get in touch with me. And once again, thank you to Ambedkar International Center for having me. Jai Bhim, Namo Buddhaya, and Jai Bharat. Thank you so much, Sujata, for sharing that. It's a reminder for all the participants. If you have any questions, you may please feel free to type in the chat box. We will have the question answer session after this following speech. Now, may I please request Asmita Kamre, a certified empowerment coach from California. You may please go ahead, Asmita. Thank you. Yeah, hello everybody, and thank you so very much, Archana, for introduction, and thank you AIC for giving me this opportunity. It's really honor to share the stage, speaking stage with such dignitaries, right? When I was listening all these leaders from diverse area, my heart was literally moved, and I got so many inspiration from their stories for sure. So women have the nature, a fierce and robust spirit, which help her to strong determination to rise up despite their challenges. So I believe woman is a full circle, and she is born with unique power to create, nurture, and transform. Raise your hands if you second on this point, on this statement, right? We have been seeing that. We around, not only in bigger leadership areas, we have been seeing around us. I proudly could say that I am being one of those strong women who is raised by a strong woman and surrounded by strong women, and I'm now raising a strong woman for sure for the future. So hello everyone, I'm Asmita, and I'm an empowerment coach by passion, but my background is a software professional. I'm on mission to help sensitive people, empaths, especially women who feel lost, overwhelmed, stressed, empty while going through life's priorities and transitions, so that they would, reclaim and redesign their life for their absolute dream life. Like they have been dreaming. Being a woman or being a human, we all have dreams, but when we hit to those roller coasters, we lose our track, we feel lost. So that's where I experienced through my own journey, and I landed up on this mission. Coming to this mission was not very much planned. It was not planned. Because of my own challenges, I made to this mission. I am basically kind, loving, and optimistic person. Being an empath, I feel people's emotions, what they are going through, what they need. I mean, what are their needs, and it is coming to me very naturally, being an empathetic person. And I have been playing my role in my dear one's life since my childhood itself, helping them and giving them that what I can say, arm to to have that comfort, so that they could open up their heart. And I have been helping them since my childhood itself. But I feel that life's roller coaster journey, when I feel that intensely, before marriage, it was like all having green things. But after marriage, when we feel like life work imbalance, I think we all could connect with my statement. We all feel that imbalance, and we feel like naturally lose our track, and we landed up into blaming game, right? Because of this is happening, because of that person, and that's how my journey was in that zone only. But because of Buddhist practices, because of books, because of several different mentors, I am here, and I could give that same leadership to the women who are actually struggling in similar zone. I had almost lost my true nature and was into that emptiness and isolation.
I understood being good and being on noble path blindly would affect you harshly if you are ignorant about EQ, mindset, awareness, and self-love factors. You would lose yourself again and again in similar patterns if you don't put right efforts, right work on that area. So I could bounce, as I conveyed, I could bounce back because of Buddha's teaching, practices, mentors, books, like-minded friends and family. Then I have been evolving and getting redirected to different platforms. And as a result, I could reclaim and redesign not only my life, but now I'm helping others to do the same. So why I'm here, like, yeah, this is all about a little bit of my story, but why I'm here, of course, to, to celebrate that leadership, global leadership from entire woman out there. But I'm here to have that heart-to-heart dialogue, because some or other time you would be, facing this kind of roller coaster for sure. How you will take yourself, how you navigate yourself from that moment on. This is my only message. Through my own story, I could say my journey is transforming from that pain to power, and we are all having that ability to transform our pain to power. So even though you take this one word from my entire speech, I would say, like, my work is done, right? So we need not to have like certain titles to be a leader in the society, or even in our own life. It happened through like genuine efforts, however small or big is, and the right efforts. When you put the right efforts at your current state, that right things will come to you naturally, and it is a law. It is a nature's law. And I feel like if you are here on this platform, you are taking your Sunday morning, that to Sunday morning, with all of this very sensitive topic, then you almost already doing that, taking that right efforts. And please clap, have that like clap yourself, or we can say have the round of applause for yourself, of course, that you already taken that right step, however small it is, because this seed, these words from different leaders, this seed is getting in your mind, and one day you will be definitely on that position. And of course you are, of course, now also you are already transforming many of the situation, but you are not registering that for yourself. Why? Because we are generally seeking that outside validations. If I get appreciated from my boss, from my family, then I'm worthy. So please take that weight lift off from your mind and from your life, that you are more than worthy. You need not to seek any validations from outside world. If you love yourself, if you know your strength, you are like very much connected to your inner self, and you will navigate your life very very beautifully, without feeling feeling that judgment and feeling rejection from the people around you. So when I'm talking about, like, yes, there are leaders who are like shaping the world, and it is not only one or two field. Like usually there were time like only teaching in the teaching field or nurse field or similar, some small businesses on in that area only woman was raising their work. But now we see that like now especially in pandemic, when we see like around the world, women have leadership in tech industry, CEOs, all are having different background from leaders, women leaders. Then we have the leaders in even in cricket industry, right? There was a time like only women's cricket, there was not so much popular, and now we see that women's World Cup is going on, and the one inspiration from that from that World Cup match is like one cricketer is playing for her country with a 6-month baby. Wow, what a great inspiration. It is reminding ourselves about history, right? Jhansi ki Rani, she is like modern Jhansi ki Rani, right? She is taking care and inspiring each and everyone around the woman, like, yes, despite of your any situation, you have power, and when you put your mind, you can definitely change that and be that inspiration
to all around, to the people and women around the world. So yeah, I think this is like more than amazing things. When we're putting our mind or awareness around us, we are like already have those stories, you know. And I would ask you, please connect any of the person who has similar story. Sometimes we could do, we don't feel like connected to like Michelle Obama or Oprah Winfrey, because their story may be different, so we don't feel that much connection, right? So now we need to have that openness, like, okay, this is my situation, who have transformed that thing in their life. And when we see that role model, no, it is easy for us to navigate ourselves like and follow their path, because some or other person already set that path for us. Our job is not to reinvent the vehicle. Our job is to, you know, just walk that vehicle, right? To use that vehicle instead of creeping and taking that excuses. Okay, oh, I don't have that background. Oh, my age is not you know, aligned. Oh, I have this what I can say, any of the situation, right? There are like different things. We have many of the beliefs, conditioning. Because I'm woman, I'm not able to do that. Because I am having that responsibility, I'm not able to handle other stuff. So yeah, there are like lot many inspirations around. Just open the eyes and open your heart and just go along the go along those inspirational people, because every one of us, you know, holding that space for you, and really want all of us, including men. I would really appreciate male in the society, and especially on Zoom, they're really supporting all leadership, women leaders on even my home, right? If I'm able to do many things, despite my kid is like 9-year-old and my other responsibility, I really appreciate my husband and of course my father. Because of their, you know, openness, I could do lot many things I wasn't think of. Like I was not anytime was dreaming like I would be not talking like this on this platform. So yeah, this is the result of our the ancestors' effort and the support from the main society as well. So yeah, with that, I would be, you know, closing my talk, and thank you so very much, everybody. Have a great time. Thank you. Thank you so much, Asmita, for sharing that. We have one question from Naksin. I think that question is to all the speakers, all 4 of you. What would be one-liner message to the deprived women in India to uplift to your level? Sima ji, can you please share कि ऐसी कोई महिला इंडिया में है जिनको वो सुविधा नहीं मिल पाती, ऐसे रिसोर्सेज से डिनाई करते हैं, ऐसी वुमेन को अपनी आप को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ सुझाव है आपके? सीमा जी, प्लीज गो अहेड. या डेफिनेटली अर्चना मैम, अगर इंडिया, इवन की इंडिया पूरे वर्ल्ड की बात करें और स्पेशली इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कोई भी फीमेल अगर अपने आप को नहीं आगे कर पा रही है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसके लिए, बट उसका ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. लेकिन एक और मैं क्लियर बात करना चाह रही हूँ कि लास्ट 10 ईयर से मैं विमेन वारंटी राइट एक्ट के लिए हमेशा ट्राई कर रही हूँ कि विमेन सेफ्टी सिक्योर, महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम, जिसमें अगर कोई फीमेल जो फिनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करे, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करे, तो वो कहाँ पर जाए, क्या करे. तो इसके लिए विमेन सेफ्टी वारंटी एक्ट की मैं डिमांड कर रही हूँ. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ जितने भी पीपल्स हैं कि इस एक्ट की डिमांड की जाए, जिससे कि उनका एक ये फंडामेंटल राइट मिले कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कैटेगरी की, किसी भी एज ग्रुप की फीमेल गवर्नमेंट से अपने इस राइट की डिमांड कर सके, अपने आप को अपने ग्रोथ करने के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए. बट अगर ऐसी कोई फीमेल है तो मैं यही कहूंगी कि मेरा समृद्ध भारत ट्रस्ट है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकती है. आपके पास अर्चना मैम हमारा नंबर है, क्योंकि मैं सारे फीमेल के लिए तो नहीं कर सकती हूँ, वो एक प्लानिंग के तहत गवर्नमेंट के लेवल पे होगा, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स जो इस तरीके के उनके लिए हो सकेगा. लेकिन अगर अभी कोई फीमेल
जिसको इनिशियली जरूरत है, चाहे वो फिनेंशियली सपोर्ट की हो, लीगल हेल्प हो, या एजुकेशन के लिए, या इवन की बेसिक अगर वो कोई छोटा मोटा जॉब भी करना चाहती है, तो वो डेफिनेटली मेरे ट्रस्ट को कांटेक्ट करें, मैं उनको सपोर्ट करूंगी हर तरीके से। Yes. Thank you so much, Seema-ji. I hope from the participants you got the message. She has been inspiration and totally she is ready to help everybody. So thank you so much, Seema-ji, for that. Sujata, do you want to go ahead and add something? Your views, a one-liner message to the deprived women in India to uplift to your level? Please go ahead. Yeah, I would mainly, kind of compliment what Seema ji said, and what I have seen, and I'm sure this is not a surprise, and it is, very much a universal truth, is that there are layers of, social structures that are, keeping them from realizing their dreams, becoming, economically independent and all of that. But I think the one thing that I have seen, especially, is that they have everything in them to become superstars. They already have it. They have, they have grit, they have talent, they have creativity. They know how to be able to either, bang through obstacles or around or over. They have all of the recipes, that it takes to be successful. The one big leapfrog is really English education. I mean, if they were literate and they could, speak English confidently, there's a lot of, so in ways, both at an NGO or a volunteer level, that we can help, and at the same time, like Seema ji was saying, from a policy or a law that says that, where do women go if all other doors have been shut for them to realize their dreams? I think between a combination of that, those are the things, because I mean, I would say that the only thing that is keeping, especially Bahujan women from becoming real, I mean, Fortune 500 CEOs, because I come from, a business background, that's kind of like the metric that I'm using, but is the ability, is literacy and, English fluency. And if we can even, really focus on that, there's so much of their talent and potential and productivity that can come out. Thank you, Sujata. Please, Dolly, go ahead. Oh, I would just second what Sujata said, that they pretty much have all the internal resources already. So I think it's just addressing systemic things. And as Sima mentioned, we have a phone number also where people can reach us. And usually we work with, when we get to know somebody, we usually support them for either education, healthcare, or anything else that we can help with. So they can also contact us. Thank you so much, Dolly. Asmita, go ahead, please. A one-liner message. Sure. My one-liner message is just to focus on your strength. You have strength, but we generally focus on weaknesses, and that's where we feel like lost. That's where we feel like not worthy. But when we are focusing on strength, the passion will come to you, and the passion, it will be, natural way to bloom. I would say, like, when you get the passion, you're gonna definitely empowered by yourself. And working on your passion is easy for you, instead of going with the market trends and what other are expecting from us. So yeah, please work on your strength and passion. That's it. That's my message. And for our, if you want to reach to me, to work with me, I offer one-to-one coaching and group coaching as well. I have different programs to uplift the confidence, self-compassion, self-esteem level of women. And I have been transforming many humans already. So you can reach out to me
to my social media platforms. I would be, posting here in the chat box, or you can see my website like www.coachasme.com. Thank you so very much. Thank you so very much, and have a great time. Thank you so much, Asmita. We have one question from Rajiv Chetan. That question is to Sima ji. He's asking, how can we support your trust, your foundation, Sima ji? I think he's looking ways to support your foundation. How can we do that? Yes, अर्चना मैम, मैंने अपना नंबर आपको शेयर किया है. आप राजीव चेतन सर को शेयर कर सकते हैं. देन चेतन सर किस तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम पहले डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर चेतन सर का वेलकम है. अगर वो मेंबर भी हमारे ट्रस्ट में मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं और तो उनका स्वागत है. एंड थैंक यू सो मच चेतन सर, राजीव चेतन सर, थैंक यू सो मच. Thank you so much, Sima ji. That's very nice of you. And I think Rakesh ji has one question. Rakesh ji, you may please go ahead, unmute yourself and ask the question, please. Thank you. My question to Sima ji is how legal awareness on sexual harassment and atrocities can be spread in a wider way, means especially for females in remote villages. इसमें राकेश सर, एक तो सोसाइटी के लेवल पर और दूसरा गवर्नमेंट लेवल, ये दोनों से ही ये पॉसिबल हो पाएगा. गवर्नमेंट का जितनी भी प्लानिंग्स है, स्पेशली अगर बात करूं विमेन राइट्स को लेकर के जितने भी प्लानिंग्स हैं, उसमें अवेयरनेस को इंक्लूड किया जाए. देन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में फीमेल के फेवर में किस तरीके से जो मेल पर्सन है, हमारे चाइल्ड हैं, जो भी किड्स हैं, उनको कैसे अवेयर किया जाए कि वो सेंसिटिवली इन चीजों को टैकल करें. एंड उसके अलावा अगर सोसाइटी के लेवल पे बात करें तो जितने भी एनजीओज हैं, उन सारे एनजीओज को आई थिंक मुझे लगता है कि कलेक्टिवली वर्क करने की जरूरत है. बहुत सारे इंडिया में जो गवर्नमेंट के सिस्टम में, जैसे पंचायती राज सिस्टम है यहाँ पर, जहाँ पर डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है पावर को. और अगर इन पंचायती राज सिस्टम में जैसे आशा वर्कर हैं या बहुत सारे इस तरीके के पोस्ट हैं जहां पर फीमेल डायरेक्ट जाकर के रूरल एरियाज में फीमेल को कनेक्ट कर रहे हैं वो लोग, तो उनके साथ में अगर हम फीमेल के राइट्स को लेकर के उनको अवेयर करें और मेल पर्सन को ये उनकी एक ड्यूटी समझ करके कि जो फीमेल डिप्राइव्ड हैं इस सोसाइटी में अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए उनका सपोर्ट वो करें. और जो भी अपब्रिंगिंग बच्चों की हो रही है, तो एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली इस चीज को मेंशन करना चाहिए. और साथ ही साथ जब जैसे पीटी होता है, पेरेंट्स मीटिंग होता है, उसमें अगर बच्चे के मदर फादर दोनों को बुलाया जाए और वहां पर फीमेल के प्रति सेंसिटिव बनाने की बात हो, सेक्स एजुकेशन की बात हो वहां पर, और बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात हो. और जब तक हम फीमेल को इंडिया में एक ऑब्जेक्ट के रूप में या एक उसको हाउस वाइफ के रूप में ही देखना पसंद करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं. ये गवर्नमेंट के लेवल पे अगर ये चीजें डिसाइड होंगी कि आपके घर की जो फीमेल है या आपकी जो बेटी है वो भी इक्वली डेवलप होकर के आपकी फैमिली में फिनेंशियली वो डिपेंडेंट होकर के आपकी फैमिली को भी मेंटेन कर सकती है. बट इंडिया में अभी क्या है कि एक तरीके से पूरे सिस्टम में ये है कि फैमिली में जो मुखिया है या फिर जो मेल लीडर है वो मेल पर्सन ही है. फिनेंशियली उसको ही फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना है, सोशली भी उसको स्ट्रॉन्ग करना है, हर तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना है अपनी फैमिली को. और इन सारी लीडरशिप से जो फैमिली के अंदर है उसको मेल फीमेल को दूर रखा गया है. इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर है. अगर इन सारी चीजों की बेसिक अवेयरनेस होगी, एजुकेशन हमारी जो है पॉलिसीज है उसमें इन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही इजीली, हालांकि एक टाइम टेकिंग है, इनिशियली इन चीजों को लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उसका अगर हम प्रॉपरली यूज करके इसको अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, तो ये पॉसिबल हो सकता है.
Right, right. Yes, I think it's a very, Yes, Rakesh sir. right. Yes, thank you so Yes. much. Yeah, I think, Archana ji, can I read one question from Prasad ji? There is one more question. Yes, please, Sima Rakesh, ji. go ahead. Thank Yeah. you. So it's I came heard that there are 50,000 rape cases pending in Indian judicial system and government won't release these statistics. Is there any real numbers that is published by Supreme Court on pending cases from decades? So like 50,000 cases pending hai Indian judicial system. And Rakesh उसके बाद sir, कोई statistics नहीं है, means they are not releasing any statistics on that. Rakesh sir, not only 50,000, अगर पूरे ये सिर्फ डाटा जो है ये करेक्ट डाटा नहीं है, करोड़ केसेस पेंडिंग है, करोड़ों में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो भी जुडिशरी है, या हाई कोर्ट की बात करें, इवन सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ये डाटा इवन की अगर अदर केसेस की बात करें जो क्राइम हो रहे हैं, रेप केसेस की बात करें, तो रेप केसेस तो बहुत नंबर ऑफ केसेस ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स की वजह से। अगर उन सभी को काउंट कर लिया जाए तो ये केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ जो केस रजिस्टर नहीं हो रहे उनको इंक्लूड किया जाए तो इस सोसाइटी का एक बहुत कहेंगे कि एक खराब जो फेस है वो निकल करके सामने आएगा। लेकिन क्या है कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो विक्टिम है उसको ही हम एक्यूज्ड की तरह ट्रीट करते हैं। सोसाइटी का स्ट्रक्चर ये है कि अगर किसी फीमेल के साथ रेप हो गया तो उसके साथ मैरिज कौन करेगा, लेकिन वही जो रेपिस्ट है, जो एक्यूज्ड है, उसकी एक्सेप्टेंस अभी भी है। या हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर लें, या हम बहुत सारे जर्नलिस्ट की बात करें, या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जिनके ऊपर उनकी ही कलीग ने हरासमेंट का केस फाइल किया था उनके अगेंस्ट में। देन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने, क्योंकि उन्होंने कहा ये अपना ट्रायल करने का मुझे खुद ही राइट है, जो कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट था, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट था, उन्होंने अपना ट्रायल खुद करके सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को इक्वेटल कर लिया उस केस में। तो ये जो माइंडसेट है सोसाइटी के अंदर, इसमें आपने का जो क्वेश्चन है कि 50,000, मैं कहूंगी सर ये डाटा जो है इनकरेक्ट है। करोड़ों की संख्या में केसेस पेंडिंग है जिसका सही तरीके से डाटा हमारे पास नहीं है, ये रियलिटी है। बट मेरा ये मानना है कि अगर फीमेल लीडरशिप आती है इस देश के अंदर तो शायद फीमेल के राइट्स को लेकर के वो ज्यादा सेंसिटिव होकर के पार्लियामेंट में जो भी कानून है वो इस तरीके से बनेंगे कि उनका जो भी हमारे पास रिसेंटली लॉ है उनका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ये अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ये पेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और सोसाइटी के अंदर जो एक्यूज है, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके अंदर डिटरेंस नहीं होगा। अगर डिटरेंस नहीं होगा तो हम लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सरकार के लेवल पे पूरी तरीके से फेल होंगे। और फीमेल को एक साइड हम उनको अवेयर कर रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं, वो बाहर निकल रही हैं, उतना ही उन पर अटैक हो रहा है। तो ये दो कारण है कि सोसाइटी के लेवल पे हम चेंज नहीं कर पा रहे लोगों के माइंडसेट, और दूसरा हम लॉ एंड ऑर्डर या गवर्नमेंट के लेवल पर इन चीजों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों का जो एक कन्विक्शन रेट है वो बढ़ जाए। तो ये बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आई होप कि इन फ्यूचर इस तरीके से चीजें बदलेंगी, अवेयरनेस अगर आएगी और गवर्नमेंट के लेवल पर चेंज होगा। Thank you. I think it was a very good insight and is a honest feedback from your side. Thank you. Thank you. I think Amit has some question. He raised his hand. Amit, can you please type your question you have, if you have any? Archana, is it possible to give access to Anil? Yeah, I think that would be great if you can type your questions, please. Thank you. I think Anil has a valid concern about lowering the fees. We can talk offline for sure. Thank you. And it seems there are no more questions. Sanjay ji, can you see any?
I don't see any. Okay, great. So thank you so much, everyone. And still, if you feel, you can type it. And right now we will go ahead with the vote of thanks by President Sanjay Kumar. He's the president of Ambedkar International Center. You may please go ahead with your vote of thanks. Thank you, Sanjay ji. Thank you, Archana ji. Thank you so much. And it was really wonderful seeing all the women, all the women panelists. And you had done wonderful job, hosting this event. I was just seeing that the panelists, I think it's a very comprehensive group of the speakers we had today. Sujata, a social worker, like Dolly, she is a physician and the healer of the society. Also, I would say, like, treating the people who are in need. Asmita is a motivator, empowering the women, especially the women. And Sima is the fighter. So if anything happens, she is there to fight. So it was a really most comprehensive panel, I can assume. And Sima ji well said that I believe I'm completely with you, Sima ji, that now women have to step in to make this world better. I think it is going the way things happening in Russia and anywhere in the world. We have evidence that is because of men. So they have to come, women have to come forward and step in and fix this issue, fix this world. I think they are the one who now, I think they are the one who can make this world better. And Baba Sahib already had visualized it, like I would say 70 years before or more than that, right? That woman is the like indicator of any progress of the society, right? So he already visualized it. So now we have to step in, and we had a wonderful discussion and wonderful panelists. I just again congratulate all of you and happy International Women's Day. I just want to share one more thing before we close it. We are building a memorial over here in United States. You all know that, near Washington, D.C. So this is why it is important to mention it over here, because this vision of how this memorial should be also by the women. There are two girls, they did it, the student, they created this walkthrough of how our memorial should look like on 13.1 acre land, which is, the land is pretty close to, the property is pretty close to Washington, D.C. So I would just, I'm just going to play that. It's a 1 minute 51 second video. They have created it. Women, the two women, our Jayashree and Parniti, their name is, they had the one who visualized the whole thing, how it should look like. And I would just go ahead and play that. And please, I will request all of you help this project, and we will do it together. So thank you so much. And this is my last presentation, 1 minute 51 seconds. So I'm going to share my screen. Share my screen. Screen. Share. I just got it yesterday, so I just wanted to share it with you, how our memorial will look like. And
This is Asoka Stoop. Thank you so much, everyone. Over to you, Archana. Thank you so much, Sanjay ji, for sharing that. And thank you everyone for their wonderful comments I could see in the chat box. So thank you so much, everyone. Thanks to all the speakers as well. And thanks to all who have made this event such a beautiful one, such a lovely and inspiring one. So wishing you all good luck, everyone. Be happy always and be united always, no matter what. Have a wonderful time. See you next time in any of the events. Take care and bye.